In the heart of Khyber Pakhtunkhwa lies Di Khan, a community once devastated by unforgiving floods, with homes destroyed, lives uprooted, and livelihoods lost. Life came to a standstill. But from this devastation emerged a story of resilience, hope, and recovery. With the need for a robust and sustainable response, the Resilient and Adaptive Population in Disaster Rapid 2 project was developed by the National Disaster Risk Management Fund, NDRMF, and implemented by Islamic Relief Pakistan, IRP. A targeted mission to protect Di Khan from the destruction of floods by building flood protection walls that would redirect flood water away from the community, ensuring their safety from future calamities. Islamic Relief ने ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट NDRMF के ताउन से लॉन्च किया, जिसकी वजह से हमारा दराबन की जो तहसील है, दराबन का जो मेन सिटी है, उसके 3 मेन मोहल्ले जो कि इन इटसेल्फ फौरी तौर पे इसके साथ एडजेसेंट हैं, एक तो वो बचेंगे, लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो वो पूरे का पूरा शहर बचता है। अभी माशाल्लाह इस्लामी रिलीफ वाले आए हुए हैं हमारे साथ, ये बहुत ज़्यादा ताअमन कर रहे हैं। मिसाल उनकी वजह से हमारा बंदोबस्ती काम हो रहा है, इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान से अभी बच रहे हैं। जो हमारी कम्युनिटी में लास्ट कंसल्टेशन थी तो उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि लोग अब बड़े मुतमईन फील कर रहे हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर जो हैं ये बन गए हैं और वो सेफ़ फील कर रहे हैं। अभी हालिया में हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किट इन चारों विलेजेस में तकसीम की और उसके इस्तेमाल के लिए उनको ट्रेन किया। हमें काफ़ी इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है इस्लामिक रिलीफ में, तो जब भी उसमें कोई क्रैक वगैरह कोई भी फॉल्ट आएगा तो इंशाल्लाह फिर वो हम खुद उसको मेंटेन करेंगे। घर बनाने के नाल सारे तमाम मुसलमान खुश हैं, सही इलाके के सारे लोग जो सारे जरना तरसली थी गई असा अपना माल रखू तो असा कोई दा चिंता खतरा ना हो से जो असा कने बाहर ना निकसू। Rising from the floods, Di Khan embodies the spirit of recovery, proving that with determination and the right support, even the hardest hit communities can thrive, paving the way for a brighter, more resilient